बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन के 10वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डेटा से मुतल्लक होगा, जिसमें हम जो टूल ऑफ द टूल डेवलपमेंट फॉर द डेटा कलेक्शन इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स जो है वो भी आज डिस्कस होंगे। स्टेट द 5 steps in the process of quantitative data collection. Identify how to select participants for the study. Identify the permission needed for the study. List different options for collecting information. Locate, select and assess and instruments for use in data collection. Describe procedures for administering quantitative data collection. ये हमारे आज के 3, 4, 5 इस लेक्चर के मौजू होंगे, इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको मारिया की एग्जांपल याद होगी। मारिया decides to study the quantitative research question. Why do students carry weapons in high schools? Maria wonders who can provide this information. Even if I locate some student, will they come forward with the information? जब हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमारा अगला जो हमें फिक्रमंदी होती है वो ये होती है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कौन हमें सही इस टॉपिक से सही करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है, और क्या जब हम उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस टूल के साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, और अगर हम ये सारी चीजें कर भी लेंगे तो क्या वो लोग आसानी से हमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो जब इस तरह के सवाल हम सोचते हैं तो असल में हम डेटा कलेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं। Choose types of the data and measures. An instrument is a tool for measuring, observing, or documenting quantitative data. Identified before the researchers collect data, the instrument may be test, questionnaire, tally sheet, log observation checklist, inventory, or assessment instrument. Identified before the researcher collect data, the instrument may be research data collection से पहले हमें इसमें से कोई एक टेस्ट टूल जो है वो सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डेटा। हम कोई टेस्ट बना सकते हैं, कोई क्वेश्चनर हो सकता है, कोई टैली शीट हो सकती है, लॉग हो सकती है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, इन्वेंटरी और असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। रिसर्चर यूज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अचीवमेंट, assess individual ability, observe behavior, develop a psychological profile of an individual or interview a person. हमारे डेटा की नेचर पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर्स, लेट्स हैव सम टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कि हम किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो देन कौन सा टूल लगाएंगे? यू कलेक्ट परफॉर्मेंस मेजर टू असेस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट, इन्वेंटरी, participants take tests that measure their achievement. The OVA test of the basic skills, their intelligence, bachelor or their aptitude stand for delay. अगर आपका टॉपिक जो है वो किसी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए है, किसी एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए है, इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए है, तो हम किस तरह के टेस्ट जो है वो आमतौर पे लगाते हैं, या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। एटीट्यूडनल मेजर्स, अल्टरनेटली यू कैन मेजर एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स, अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ द क्वांटिटेटिव डेटा फॉर सर्वेज, कोरिलेशन स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमने एटीट्यूड मेजर करना है, इस तरह की स्टडी है आपकी किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड है या कोरिलेशन स्टडी है या कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे? रिसर्चर यूज एटीट्यूडनल मेजर्स व्हेन दे मेजर फीलिंग टुवर्ड्स एजुकेशनल टॉपिक्स, assessing positive and negative attitude towards giving the student a choice of the school to attend. To develop attitudinal measure, researcher often write their own questions or they find an instrument to use that measures the attitude. अगर हमें एटीट्यूड मेजर करना है तो उसके लिए भी देख ले, इस तरह के हम आमतौर पे टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है, ये सारे टूल्स के लिए हो सकता है कि आप खुद से बना बनाया कोई टूल आपको मिल जाए, या आप खुद से अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो लिख लें। Behavioral observation are made by selecting an instrument or using a behavioral protocol on which to record a behavior, observing individual for that behavior and checking points on a scale that reflect the behavior checklist. The advantage of this form of data is that you can identify an individual's actual behavior rather than simply record his or her views or perception. ये भी बड़ी अहम स्टडी है हमारी एजुकेशन के अंदर कि जब हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो कोई चेकलिस्ट बना लें, उस पर
तो जो मुख्तलिफ वक्तों में आप बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस देख रहे होते हैं, बिहेवियर प्रोटोकॉल उसको कहते हैं, वो आप रिकॉर्ड करते जाए तो आपको आपके सामने एक्चुअल चेंज इन बिहेवियर जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। Factual information. Factual information of personal documents consist of numeric individual data variables in public records. Examples of these types of data including grade reports, school attendance record, student demographic data, and census information. As long as these documents are available in the public domain, researchers can access and use them. Factual information means अगर आपके टॉपिक के साथ कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिसमें उनका बच्चों का नाम, उनके ग्रेड, उनकी परसेंटेज, उनका फैमिली बैकग्राउंड या इस तरह की चीजें हैं, तो आप वो भी आपको गैदर करनी होती है। वो किसी रिकॉर्ड के अंदर होगी, स्कूल से ली जा सकती है, फैमिली से ली जा सकती है, और समवेयर एल्स। What instrument will you use to collect data? आइए आप देखते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट फिर किस तरह का लगाएंगे। पीछे हमने कुछ डिस्कस कर लिए हुए। सबसे पहले क्या करना है, लोकेट अ ड्वेल पेन इंस्ट्रूमेंट। कोशिश करें कि आपको कुछ बना बनाया मिल जाए, उसको अडेप्ट कर लें, तो वो ज्यादा आसान है। नहीं तो फिर आपने क्या करना है, 3 ऑप्शंस exist for obtaining an instrument to use. You can develop one yourself, locate one and modify it, or locate one and use it as in its entirety. पहली ये हो सकता है कि आप अपना खुद से डेवलप कर लें, सबसे अच्छी बात है, ताकि आपकी जरूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा सके, या आप ढूंढ लें और उसको मॉडिफाई कर लें, या ये है कि ढूंढ लेंगे और जैसा वो रहा वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये जो एज इट इज इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा अच्छा टूल नहीं गिना जाता, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाजमी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जरूरत के मुताबिक पॉसिबल है कि पहले वैसा टूल मौजूद ना हो। Of these choice, locating one is to use either modify it or using it in original form. It presents the easiest approach. It is more difficult to develop an instrument than to locate on one and modify it for use in the study. हाँ, ये बात सही है कि अगर तो बना बनाया मिल जाए तो ज्यादा आसान है, उसको मॉडिफाई करना ज्यादा आसान है, लेकिन खुद से बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि फिर उसको जस्टिफाई करना आसान है। बस आपने करना क्या है कि आपने उसको वैलिडेट करना है फिर, और उसको इस तरह इतना अच्छा बना लेना है कि वो आपके मकसद को पूरा कर सके। Modifying an instrument means locating an existing instrument, obtaining permission to change it, and making changes in it to fit your requirements. Typically, authors of the original instrument will ask for a copy of your modified version and the results from your study in exchange for your use of their instrument. मॉडिफाई का मतलब आपने कोई टूल ले लिया है या अब उसको आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई करना है, तो उसका अच्छा तरीका, साइंटिफिक तरीका ये कि जिसका वो मॉडल है उससे रिटर्न में परमिशन ले ले। फिर मैं आपके इंस्ट्रूमेंट को समटाइम तो कॉपीराइट होता है कि आप वैसे ही कर लेंगे तो वो जुर्म है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कॉपीराइट अभी इतने ज्यादा वो नहीं है, लागू नहीं है, तो आप उसमें रिटर्न ले लें एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो मुझे अपनी रिसर्च के लिए आपका जो टूल है वो मॉडिफाई करना है, तो वो आमतौर पर इजाजत मिल जाती है। Search for instrument. If you decide to use an existing instrument, the publisher or author will typically charge you a fee for use of the instrument. Sometimes हमें इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है लेकिन वो कहते हैं पैसे लेंगे। जैसे मैंने अपनी रिसर्च के लिए की मैथमेटिक्स फॉर सोशल एजुकेशन मेरा टॉपिक था, तो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा, यूएसए से तकरीबन 2007-8 में 50,000 का मैंने खरीदा। तो समटाइम आपको पैसे पे करने पड़ जाते हैं, कई दफा हमें फ्री में भी मिल जाता है। तो दोनों कोशिश करें कि आपको फ्री में मिल जाए, पैसे ना देने पड़े, तो इस तरह का आपका जुगाड़ ला दे। Finding a good instrument that measures your independent, dependent and control behavior is not easy. आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तजर्बा ये बताता है कि इतना मुश्किल नहीं हम कर पाते इसको। Look in the published journal article, आप ढूंढ लें, इंटरनेट से तलाश कर लें जो जर्नल्स है पब्लिश हुए हुए आर्टिकल, उनमें जरूर रेफरेंस किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का दिया होता है। Ask course on past use of the instrument, liable and valid. दो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्कोर है वो जो आप मेजर करेंगे क्या वो आपके लिए लाइबल होगा, तो उसके लिए 2 टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, एक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जो आपने कायम करनी होती है इंस्ट्रूमेंट। बना बनाया भी अगर लगाएंगे तब भी आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालना है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो उसी को मेजर करे और उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स जो है वो रिलायबिलिटी कहलाता है। मसलन एक दफा आपने टेस्ट लगाया, उसके रिजल्ट आए, फिर आपने दूसरी दफा इस्तेमाल किया तो वैसे रिजल्ट आए, तीसरी दफा इस्तेमाल किया तो वैसे रिजल्ट आए,
एक शहर में किया, एक मुल्क में किया, दूसरे मुल्क में जाके किया, जब कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स होगा तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट लायबल होगा. Liability means that scores from an instrument are stable and consistent. Scores should be nearly the same whenever researcher administers the instrument multiple times at different. मैंने बता दिया. वैलिडिटी से मुराद है कि जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया वो उसी मकसद को मेजर करे. मसलन इस्लामियत का टेस्ट इस्लामियत को मेजर करे, ना कि उर्दू को मेजर करना शुरू कर दे. मैथ का टेस्ट जो है वो मैथ को मेजर करे, ना कि बच्चों की इंग्लिश टेस्ट करना शुरू कर दे. तो अगर बनाया गया टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसी मकसद को वो मेजर करे तो वो टेस्ट वैलिड कहलाता है. Reliability, a goal of a good research is to have measure or observation that are reliable. Several factors can result in unreliable data, including when reliability बड़ी जरूरी है. Reliable इंस्ट्रूमेंट होगा तो अच्छी वो आएगी, आपकी रिजल्ट अच्छे आएंगे. Sometimes reliable data हो तो नुकसान इस तरह से हो सकता है. Questions on instrument are ambiguous and unclear. Procedures for test administration vary and are not centralized. Participants are fatigued, are nervous, misinterpret questions, or guess on test. तो अगर लाइबिलिटी नहीं होगी तो फिर इस तरह के नुकसान जो है वो हो सकते हैं. लाइबिलिटी की इकसाम है कुछ सब. टेस्ट लाइबिलिटी प्रोसीजर एग्जामिन्स द extent to which scores from one sample are stable over time from one test administration to another. जितनी दफा टेस्ट लेंगे, आपने एक दफा बच्चों का टेस्ट दिया, फिर टेस्ट दिया, फिर टेस्ट दिया, तो जब आप टेस्ट लेंगे तो आपके रिजल्ट सेम आएंगे, जिसको हम कहते हैं टेस्ट लाइबिलिटी है. Another approach is alternative form of the liability. This involves using two instruments, both measuring the same variables and relating or correlating the scores for the same group of individuals to the two instruments. हम एक जैसे दो इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं जो एक ही वेरिएबल को एक ही कंसेप्ट को मेजर करेंगे. करते सिर्फ ये है कि उसमें से इवन कोड हम जो है वो नंबर आगे पीछे कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत कंटेंट का फर्क डाल लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक ही रहता है उनका कि मेजर जो है वो एक ही वेरिएबल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ये कहलाती है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द लाइबिलिटी. Alternate form and test liability approaches is simply a variety of the two previous types of the liability. In this approach, the researcher administers the test twice and uses an alternate form of the test from the first administration to the second. This type of liability has the advantage of the both examining the stability of the scores over time as well as having the clearance of the item from the potential universe of the item. तो दोनों liabilities हम आमतौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं. इंटरलेटर लाइबिलिटी का मतलब है कि जब एक ही टेस्ट दो बंदे इस्तेमाल करते हैं, 3 बंदे इस्तेमाल करते हैं, 10 बंदे इस्तेमाल करते हैं, तो 10 के इस्तेमाल करने से बंदों के मुख्तलिफ होने से आमतौर पर रिजल्ट मुख्तलिफ नहीं आने चाहिए. 100 बंदा भी इस्तेमाल करे तो रिजल्ट मैक्सिमम एक जैसे ही हो, तो इसको हम कहते हैं ये इंटरलेटर लाइबिलिटी है. वैलिडिटी मैंने पहले बता दिया कि वैलिडिटी से क्या मुराद है. Look as well how to researchers have interpreted, discussed, or measured what is intended to measure. The scores in light of their intended use evaluate whether the authors provide good evidence that links their interpretation to their use. तो जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है वही मकसद जो है वो टेस्ट पूरा करता हो तो वो टेस्ट वैलिड कहलाएगा. Standards mention 5 categories of evidence है. Evidence based on the test content, response processes, internal structure, relation to other variable, and the consequences of testing. In the discussion to follow, the word testing will be equivalent to instrument. Standard से मुराद ये है कि जितनी ये 3-4 चीजें मैंने गिनवाई हैं इस स्लाइड के अंदर, तो वो सारी एक दूसरे के साथ कम से कम किसी न किसी निहात पे पूरी उतरती हो. Evidence based on the test, on the content. One instrument will be used that measure achievement, assesses applicant for credential or other use of employment in jobs. इस तरह के इस्तेमाल हम एविडेंस बेस करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है उसका एविडेंस ठीक है. On the response processes, instruments can be evaluated for the fit between the construct and being measured and nature for the response of individuals completing the instrument or the individual conducting an observation using the instrument. तो रिस्पॉन्स अगर आपने मेजर करने हैं तो उसमें भी वही बात है कि वो एविडेंस बेस हो कि बहुत दफा सेम रिस्पॉन्स मेजर करें. इंटरनल स्ट्रक्चर सबका एक जैसा हो कि जितने टेस्ट आप लगा रहे हैं सब जितनी दफा लगाएंगे तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर और टेस्ट स्कोर्स में कोई फर्क जो है वो ना आए. एंड देन बेस्ड ऑन द रिलेशन टू द अदर वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट करते हो. टेस्ट जो है वो सारे वेरिएबल्स को रिलेट करता हो, ना कि सारे वेरिएबल्स जो है वो इन लाइन ना हो. This is last category of evidence that relates to the
traditional idea of criteria-related validity, predictive and construct. Basically, the researcher looks for evidence of the validity of scores by examining other measures outside of the test. The researcher can look at similar or dissimilar tests to see if the scores can be related positively or negatively. ये भी बड़ा अच्छा है कि आपका जो सारे वेरिएबल हैं वो मेजर होते हो, उनका आपस में लिंक हो, एविडेंस बेस्ड वैलिडिटी हो, जो भी उसको एग्जामिन करे सारे एक जैसे रिजल्ट देते हो और सारी चीजें जो है वो रिसर्चर जो है उसको मेजर करे. Consequences of the testing. This form of the evidence is the new factor that has been introduced into the quantitative validity discussion. Validity evidence can be organized to support both of intended and unintended consequences of using an instrument. What benefits liabilities have resulted from using? Sometimes testing का भी result effect आता है कि टेस्ट करने से एंजाइटी आ गई, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, माहौल अच्छा नहीं था, टेस्ट मुश्किल आ गया, उसका भी एविडेंस बेस हो कि इसको जितनी दफा लगाएंगे तो इस तरह के खतरात इस टेस्ट में मौजूद नहीं होंगे. Do the instruments data recording procedures fit the research questions or hypothesis? ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है अजीज तालिब इल्मों कि जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को मेजर करता हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट बड़ी जरूरी है. टॉपिक, objectives, research questions, hypothesis और instrument, data collection, interpretation, results. जब तक इनलाइनमेंट नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. Returning to our question of criteria for assessing a good instrument to use, another criterion was that instrument contain recording procedures in that the data you need to answer the research question or the hypothesis. डिटेल मैंने बता दी है कि ये बड़ा जरूरी है कि ये सारी चीजें इनलाइन हो. Who record the data on the instrument or checklist? कौन रिकॉर्ड करेगा? डेटा may be self-reported, that is the participant provide the information such as on achievement test or an attitudinal test. रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट है वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा या किसी ने डेटा इकट्ठा करना है. तो ये सारी चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए एज ए रिसर्चर. Are adequate scales of the measurement used? जो मेजरमेंट का स्केल है वो आपने मुनासिब लगा लिया. Another criteria is that the instrument should contain good response options to the question. जो आप लगा रहे हैं, ऑप्शन ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो सारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, गुड रिस्पॉन्स ऑप्शन वो शो करे. फॉर एग्जाम्पल, a study of student attitude towards the use of the wireless laptops in the college classroom. A researcher might ask the question, to what extent does the wireless laptop help you learn in the classroom? The student might answer this question using a categorical scale such as great extent, some extent, less extent, none का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. तो ये अच्छे रिस्पॉन्स होंगे. Scales of measurement. Now let's have the scale. Scale से क्या मुराद है? Scales are the responses option to question that measure or observe variables in categorical or continuous unit. It is important to understand scales of measurement to assess the quality of an instrument and to determine the appropriate statistic to use in the data analysis. Scale का जानना भी बड़ा जरूरी है ताकि हम जो options हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम उसको अच्छी तरह से जान सके, कर सके. Number one is nominal scale. Researchers use nominal scales या categorical scale to provide response options where participants check one or more categories that describe their traits, attributes or characteristics. These scales do not have any order. Example of the nominal scales would be gender divided into the two categories male and female. जब आपका data less than, greater than, male, female या rural, urban इस तरह की categories में तो हम आमतौर पे nominal scale इस्तेमाल करते हैं. Ordinal scale. Researchers use ordinal scales or ranking scale or categorical scale to provide response option where participants rank from best or most important to worst or least important, some trait, attribute or other check. जब इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस तरह का डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हो कि जो जिसमें most important, less important, more worst, less worst तरह का responses आने की वक्त हो. For example, a researcher might record individual performance in a race for each runner from first to the last place. Many attitudinal measures imply an ordinal scale because they ask participants to rank order the important, highly important, to of no importance, or the extent to a great extent, or a little extent of the topic. इस तरह के अगर हम ऑप्शन लगाएंगे, जैसे कि रेस की आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आप उसको ऑर्डर करेंगे, उसके लिए हम ऑर्डिनल स्केल इस्तेमाल करते हैं.
Interval or ratio scale. Another popular scale researchers use in the interval or rating scale. Interval scales, rating scales, or continuous scale provide continuous response options to question with assumed equal distances between them. Popular Likert scale, strongly agree, disagree, agree, undecided. ये जो scales हैं ये interval और ratio scale करते हैं जिनमें बड़ा specific वक्फा दरमियान में आता है. मसलन सारे एक खास वक्फे के साथ जो है वो मेजर करते हैं रिस्पॉन्सेस को. फाइंड द रेशियो स्केल, ट्रू जीरो स्केल. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर जीरो जो है वो ट्रू जीरो होता है. रिस्पॉन्स स्केल इन विच पार्टिसिपेंट चेक द रिस्पॉन्स ऑप्शन विद ट्रू जीरो एंड इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन नोड्स. ऑल्दो एजुकेशन रिसर्चर्स seldom use this type of scale. Example of it are the height of individuals and income level from $0 to $5. जीरो से ट्रू जीरो से मुराद ये है कि होगा या नहीं होगा. मसलन आपकी पे जो है वो पे या होगी या बिल्कुल जीरो होगी, या आपके घर एसी है होगा या बिल्कुल नहीं होगा. तो जीरो का मतलब ट्रू जीरो है. आपके बच्चों की तादाद है एक बच्चा है तो मतलब आपका एक बच्चा है. ये नहीं कि आप ये कहेंगे जी 1.5 बच्चे हैं मेरे पास मेरे हैं. इस तरह की एग्जाम्पल नहीं है. इसका इस स्केल के अंदर जीरो का मतलब ट्रू जीरो होता है, ना कि उसका कोई और मतलब लिया जा सकता. लेकिन आमतौर पर इस तरह के हम स्केल सैलरी वगैरह को मेजर करने के लिए जब आप फैमिली इनकम पूछते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं. थिंक अलाउड अबाउट फाइंडिंग एंड सिलेक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने से पहले ये सवाल जरूर आप अपने आप से करना है. फॉर दैट इट एड्रेस द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, द सब स्केल्स ऑन द क्वेश्चन, नॉर्म्स ऑन द क्वेश्चन obtained by the authors by explaining it from 1980 to 1984, evidence for validity of the scores from the instrument. ये कुछ सवाल है ये जो 1984 है, ये किसी खास उसके लिए है, आपके लिए ये मुद्दत का तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल जरूर अपने आप से करें. एविडेंस फॉर लाइबिलिटी ऑफ द स्कोर बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी. लाइबिलिटी जरूर एस्टैब्लिश करें. वैल्यू ऑफ द मैनुअल, स्पेशली द इंक्लूजन ऑफ द पोटेंशियल एथिकल इश्यूज इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट. The overall value of the instrument for college counselor or the research application, the limitation of the instrument. ये चीजें बता रहे लाजमी जिसकी ये लिमिटेशन है और जिन जो लोग इससे कंसर्न है वो भी सारा. How will you administrate the data collection? Standardization. उसको करने के लिए स्टैंडर्डाइज तरीका लगाएं. परफॉर्मेंस मेजर, एक्टिविटी मेजर्स एंड we should rely on the instrument. These instruments may consist of questionnaires that researcher made to participant or hand out individually to people, surveys often administered person or other people. खुद से करने कोई ना कोई तरीका जरूर बना ले. खुद जाए किसी को भेजे, लेकिन कम से कम एक म्यार हो कि डाटा एक ही तरीके से सारे लोग इकट्ठे करें. Some ethical issue, data collection should be ethical and should respect individual and sites. तो ये सही है कि उसके अंदर इखलाकी जो आप मद्देनजर रखें, लोगों का एहतराम करें, जहाँ पे जा रहे हैं उस जगह का एहतराम करें, परमिशन जरूर ले लें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें. जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें. और इस तरह के जितने भी इश्यूज आप के साथ डाटा के साथ आते हैं वो सारे आप मद्देनजर रखें. अल्लाह हम सब का हमें आशा